हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आम पढ़ा काउंसलिंग विषय रे। जदि चैनल टी प्रथम थर कर विजिट करुँच चैनल टी सब्सक्राइब करदे। सो चलतु वीडियोटा को स्टार्ट करवा। सो प्रथमे आम पढ़ा इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग। सो काउंसलिंग रो अर्थ होची गिविंग ऑन एडवाइस टू द काउंसली, जो थी कि काउंसिलर एडवाइस दे थांती काउंसिलर को इनफॉरमेशन दे थांती क्लारिटीज दे थांती अबाउट द काउंसली प्रॉब्लम्स, जो थी कि काउंसिलर निजर टाइम दियंती अटेंशन दियंती एंड द काउंसिलर हैव ए स्किल टू असिस्ट द क्लाइंट टू एक्सप्लोर द सिचुएशन, जो थी कि क्लाइंट रो सिचुएशन को काउंसिलर एक्सप्लोर करथांती एंड देन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करथांती एंड देन सॉल्यूशनटा बाहर करथांती। तो ताकू ही आमे कहूचे काउंसलिंग। देन नेक्स्ट आमे पढ़िबा डेफिनेशन। सो काउंसलिंग इज ए मेथड जोटा कि गोटे मेथड हेल्प करि थाए क्लाइंट को टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, निजर प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई हेल्प करथाए एंड तार स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करबा को हेल्प करथाए, स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करबा को हेल्प करथाए एंड counseling also facilitate interpersonal relationship among the client, family, healthcare team members. Clear? So that is about definition of counseling. The next is purpose. First purpose is to identify the problem. The next is it help the individual through their temporary crisis. The next it also help to identify the problem behavior. The next it refers to the cases needing specialistic treatment, जो थी कि specialistic treatment दिया जाता है through the counseling service. The next counseling also facilitate communication between the nursing school, home, community and the research. Then also nursing काउंसलिंग सर्विसेज जे कि ट्यूटर्स मान को सपोर्ट करि थाए, जो थी कि से माने इंडिविजुअल को हेल्प करि थांती थ्रू आउट देयर सिचुएशन. द नेक्स्ट जदि देखिबा एथिक्स ऑफ काउंसलिंग. सो देयर आर 5 एथिक्स ऑफ काउंसलिंग. फर्स्ट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंस, confidentiality, professional boundaries. The next moving to types of counseling. So जो थी कि प्रथम टाइप्स होची डायरेक्टिव और काउंसिलर सेंटर काउंसलिंग. सो एथिरे काउंसिलर काउंसलिंग को काउंसिलीर प्रॉब्लम को सुनती एंड तार सॉल्व करि थांती. एंड नॉन डायरेक्टिव अप्रोच रे जो थी कि काउंसिलर काउंसिलिंग प्रॉब्लम्स को सुनती एंड काउंसिलिंग को एनकरेज करा जाई थाए, जहाँ द्वारा कि काउंसली निजर प्रॉब्लम्स को भलरे एक्सप्रेस करी थाए. नेक्स्ट इज इलेक्टिव अप्रोच, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दुईटा जाकर कॉम्बिनेशन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव अप्रोच काउंसलिंग को लेकिन इलेक्टिव अप्रोच काउंसलिंग करा जाई थाए. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, जोटा कि गोटे क्राइसिस सिचुएशन रे क्लाइंट को दिया जाई थाए फॉर ए शॉर्ट टर्म बेसिक. नेक्स्ट हो लॉन्ग टर्म काउंसलिंग व्हिच इज एक्सटेंड ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जे कि बहुत टाइम नहीं थाए, मे बी इट वेरी फ्रॉम डे और वीकली और मंथली बेसिक. नेक्स्ट इज क्लिनिकल काउंसलिंग. सो क्लिनिकल काउंसलिंग रे जो थी कि प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करा जाई थाए एंड जहाँ भी प्रॉब्लम्स अच्छी ताकू सजेस्ट करा जाई थाए, डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज प्रोवाइड करा जाई थाए फॉर दी प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग. So mainly here the conversation occur between the client and therapist and this may taken in form of question or answer. Next student counseling, जो थी कि स्टूडेंट को कंसर्न करा जाई थाए फॉर solve their problem related to their choice of educational institution, course, method of study, etc. Next is placement counseling. So here the counselor will advise to the counselee regarding their job or the post which are suitable to the client depend upon his ability, attitude or interest. Next counseling type is marriage counseling. So here the counselor advise the counselee and help will be provided in selecting the suitable spouse
and it also solve the problem related to the marital problems or marital relationship. Next is vocational counseling. So it is a procedure centered about the problem of selecting vacation and preparing for it. Next is individual counseling, is a last type of counseling. So mainly here focus upon the individual. The next moving to counseling process. जदि counseling process जदि देखिबा, it have 6 step, जो थे कि 6टी step रही. सो फर्स्ट हूँ अपॉइंटमेंट एंड एस्टाब्लिशिंग रिलेशनशिप. सो प्रथमे काउंसिलर ठारू अपॉइंटमेंट नहीं था एंड रिलेशनशिप एस्टाब्लिश होता है थ्रू द कम्युनिकेशन और इंटरव्यूज एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज असाइनमेंट, जो थे कि असाइनमेंट करा जाई था काउंसिलिंग को तांकर डाटा कलेक्ट करा जाई था, जहाँ भी प्रॉब्लम्स अच्छी से सब कलेक्ट करा जाई था. नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. सो आफ्टर असेसमेंट काउंसिलर जे कि डायग्नोस करी थांती एंड नेक्स्ट सेटिंग ए गोल. देन आफ्टर दैट ही सेट ए गोल फॉर द काउंसिलिंग एंड गोल सेटिंग हो सारिबा परे जोड़ा कि इंटरवेंशन क्रिएट करा जाई थाए. तो काउंसिलिंग पाई को इंटरवेंशन रहिबा दरकार से सब जोड़ा कि प्रिपेयर करा जाई थाए बाय द काउंसिलर. एंड लास्टली टर्मिनेशन एंड फॉलोअप, जहाँ भी इंटरवेंशन दिया जाइए ताको फॉलोअप करा जाई थाए इन लास्ट डे. सो दैट इज अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस. द नेक्स्ट मूविंग टू टूल एंड टेक्निक फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. सो जदि टूल टेक्निक देखिबा, देयर आर 2 tools and technique which are used for the counseling process. First is standardized tool and another one is non-standardized tool. तो standardized tool अंडर रे सब टेस्ट करा जाई थाए, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल अंडर रे गुड़ाक टेस्ट करा जाई थाए. सो या द्वारा प्रॉब्लम्स को इजीली आइडेंटिफाई करा जाई थाए. द नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ ए गुड काउंसलर. गोटे गुड काउंसलर कौन कौन क्वालिटीज रहिबा दरकार. सो फर्स्ट थिंग्स इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सो एज ए गुड काउंसलर सीए भल फ्रेंडली नेचर रहिबा दरकार एंड सिंसियरिटी रहिबा दरकार, पेशेंस रहिबा दरकार, क्लाइंट प्रति रेस्पेक्ट रहिबा दरकार एंड ऑल्सो एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. सो ये सब क्वालिटीज रहिबा दरकार. देन नेक्स्ट इज पर्सनल एडजस्टमेंट. सो गोटे काउंसलर पर्सनल एडजस्टमेंट भी हेबा दरकार, जो कि द काउंसलर सो मैच्योर बिहेवियर एंड इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी. Then next which is scholastic potentialities and educational background. So the counselor should be motivated and communicated. नेक्स्ट काउंसलर जे कि हेल्थ एंड प्रोफेशनल एपियरेंस रहिबा दरकार, जो थे कि प्रेजिंग वॉइस रहिबा दरकार, प्रेजिंग एपियरेंस रहिबा दरकार एंड लीडरशिप क्वालिटीज रहिबा दरकार, जो थे कि सी निज प्रॉब्लम हो बा अन्य मानक प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारुथिबा दरकार. देन नेक्स्ट होची फिलोसॉफी ऑफ लाइफ उपरे नॉलेज भी रहिबा दरकार. देन प्रोफेशनल डेडिकेशन रहिबा दरकार गोटे भल काउंसिलर रो. देन फेथ इन स्पिरिचुअल क्वालिटीज रहिबा दरकार एंड हैड ए हाई सेंसेस ऑफ मोरालिटी. सो एगुड़ाक हूँ गोटे गोटे क्वालिटीज ऑफ ए गुड काउंसिलर. लास्ट थिंग्स इज रोल ऑफ नर्स इन काउंसलिंग. सो फर्स्ट रोल ऑफ नर्स जदि देखिबा, फर्स्ट हूँ केयर गिवर. सो मेनली द नर्स is a caregiver who assists the client physically, mentally, socially, emotionally. Next, the nurse is a communicator. So the nurse communicate with the client, support the person, support the client, support the counselee and other health professional also, and also the nurse can communicate with the people in the community. Next is teacher. So the nurse can be a teacher who help the client to learn about their health and healthcare procedure, etc. The next is client advocate. So a client advocate act to protect the client. The next nurse is a counselor. So counseling is a process of helping the client, जो थे कि नर्स निजर क्लाइंट को हेल्प करी थाए, काउंसलिंग करी थाए, जो थी कि सी तार प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करी थाए एंड ताको हेल्प करी थाए तार स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जोड़ा कि मैनेज करने को हेल्प करी थाए. देन नेक्स्ट हूँ
मैनेजर सो द नर्स कैन बी ए मैनेजर जी कि सबू जिनस को मैनेज करी थाए जहाँ भी रिक्वायर्ड नॉलेज अच्छी जहाँ भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर अच्छी डायनामिक अच्छी तो एवरीथिंग सी शुड मैनेज द नेक्स्ट लीडर सो द नर्स कैन बी ए लीडर हु इन्फ्लुएंस द पर्सन टू वर्क the next is change agent so the nurse can be a change agent then where the nurse act as a change agent when assisting the client to make modification in their behavior the last next part is research consumer so the nurse can be a researcher who improve the client care and next is expanded career role so the nurse can fulfilling expanded career role like as a nurse practitioner as a nurse specialistic nurse midwifery nurse educator nurse researcher etc so those are about counseling यदि आपन को वीडियोटा भल लगी ताहले वीडियोटा को सब्सक्राइब कर देबे लाइक्स भी दे देबे so that is about counseling thank you